International Women's Day is celebrated in many countries around the world. It is a day when women are recognized for their achievements without regards to divisions, whether national, ethnic, cultural, economic, or say political. Today also among us we have eminent guests with us from various fields and experiences. Hello guys and welcome to another amazing live session of Trends 9 with me Mia Lakra, and today I have with me on this amazing Women's Day 2023 on my extreme left hand side is Priya Mohan. She has been part of 7 radio station launches, national music producer, podcast, NFCTC head, Red FM and audio professional. In the middle of her, we have with us is Prachi Pratap, who is an advocate by profession and owns her own law firm. She has delivered TEDx talk at IGTUV on empowering million of women. And third guest on my left hand side is Gopika Dhupa, who is a celebrity makeup artist, and I don't know कितने लोगों ने खूबसूरत बनाया है. So आज हमारे पास ये 3 खूबसूरत females है who are gonna share their experiences and different ways how we can empower women. So आज मैं एक छोटी सी चीज़ शुरुआत करना चाहूँ कि हम ये Women's Day सेलिब्रेट ही क्यों करते हैं. हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को दूर करना और उन्हें बराबरी से हक दिलाना है. सो वी विल गोना स्टार्ट विद प्रिया मोहन कि आपके हिसाब से व्हाई डू वी गाइस सेलिब्रेट वुमेन्स डे? Well, firstly, thank you for inviting me, Mia. Thank you. It's a pleasure and an honor to share this podium with 2 such wonderful ladies. Since you've asked me about why you believe we celebrate Women's Day, इसका जवाब बहुत ही सरल है. मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है और समझा है, औरतों को इज़्ज़त देना, औरतों की कलाएं समझना, ये समझना कि उनका पोटेंशियल क्या है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, is normally not recognized. It's a male dominated society. Absolutely. And it's basically to give them their due respect and empower them and highlight the fact that maybe there are some rights that need to be given to them that they don't have, so that if this gender is also uplifted, right, we have a better society and we have a more equalized, if that's the right word, society. So it's basically to highlight this very fact. That's a wonderful answer and view. So Priya, what do you think about the same? Like, why do we need to celebrate Women's Day first of all? Thank you, Mia, for having me, and I absolutely agree with what you're saying about what is the need for having Women's Day. हाँ, ज़रूरत है कि एक औरतों को भी एक टोकन डे मिल गया है कि वो इम्पॉर्टेंट हैं. तो उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी था कि एक टोकन दे दिया जाए कि औरतें इम्पॉर्टेंट हैं. वो सिर्फ अपने घर में नहीं हैं, वो बाहर भी हैं, उनके सारे राइट्स ज़रूरी हैं. बट अब इंक्रीजिंगली हमने क्या देखा है कि वो सिर्फ एक दिन रह जाता है, मगर बाकी दिन औरतों की इज़्ज़त उतनी ही रहती है. शायद हमें और इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं, जबकि हर दिन विमेन के लिए कुछ करना चाहिए या उन्हें इक्वल देखना चाहिए. बिकॉज व्हाट मैंने नोटिस किया है ऑफन टाइम्स, होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि औरतों को हक देना आदमियों से छीनना है, जबकि बात ये नहीं है. आदमी यहाँ पे तो औरत को यहाँ लाना है, आदमी से कुछ छीना नहीं जा रहा है. तो एवरी डे इज नीडेड टू सेलिब्रेट. तो आपके हिसाब से वी डोंट नीड अ पर्टिकुलर डे टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे, बिकॉज फॉर अस एवरी डे इज अ वुमेन्स डे, बिकॉज एवरी डे हम हर दिन कुछ न कुछ काम करते हैं. एंड एज पीपल से कि मर्दों के लिए तो छुट्टी हो जाती है, ऑफिस से घर आए, मे बी सैटरडे संडे, बट फॉर वी फीमेल्स वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर हॉलीडे. चाहे वो घर हो, बाहर हो, या सैटरडे संडे हो, वी गाइस वर्क, कीप ऑन वर्किंग आइदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर इट इज. एंड व्हाट अबाउट यू गोपिका, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन द सेम? मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है वुमेन्स डे को लेके. मुझे ये लगता है व्हेन दिस society is there, when God made everyone equals, so हमें एक पर्टिकुलर डे बनाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए. बट वाई वी नीड टू सेलिब्रेट इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि when there is an existence you don't need to prove the existence.
So we are there and we are doing every bit of it. In fact, we are like more than men. We are contributing to the society. We are the birth giving, gender. So हमें due respect मिले उसके लिए हमें अपने rights से fight करना पड़ता है. But why? I mean ये rights तो हमें by birth होने चाहिए ना. When God created us, it's like He's created everybody. So why to celebrate this day? I don't understand. But yes, we do celebrate it. So for the sake of it, we all are here. And मुझे ये लगता है कि it has got a deeper meaning to that. Equal wages. If a man, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि we are working all the time. So if a man, he has to go out for work, we wake up in the morning, we cook the food and we let him go to the shop or the job and हम पूरा खाना पैक करके देते हैं. But a female, we have to cook our own meals. Now that we've got servants, that is something different. But we have to cook our own meals. We have to come back, we have to cook because we have got the responsibility of whole the family. So okay, so that's a wonderful view, Gopika. दूसरा question मेरा आप लोग के लिए है कि do you guys think कि we women, we guys are really struggling and a lot in terms of making our own place in the society, चाहे वो आपकी professionally हो या personally हो या कोई भी sector field हो. So आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि हम औरतों को बहुत fight करना पड़ता है अपने जगह और अपना नाम मुकाम बनाने के लिए? So we're going to start with you, Priya ma'am. 100%. 100%. Reality check. Yep. Yes. In fact, according to latest research, the number of women working since I think 2010 to 2020 has dropped down from 26% to 10%. Women are not working. Imagine what they must be going through. I know. That they do not go out to work, which means that many women are not financially independent. Which is really important nowadays. Which is extremely important to escape other forms of abuse. Literally. True. It's a survival, it's a fight for survival. So right? according to you people, what's there, what's lacking, or what could be the reason that we women are suffering so much to make our own stand, to make our own place in society? Well, I think more than a gender issue, which of course exists. That's there. That will gonna be throughout. I don't think so we'll ever gonna get rid of I that. don't believe it is about ये लड़ाई जो है ना मर्द औरत की हम इक्वल है, मुझे ये बहुत फिजूल लगती है. मुझे लगता है कि दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. द वन थिंग लैकिंग अक्रॉस in humanity is basic respect for the other living being. True. तो मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्ट जो लैकिंग है, it's not gender based, it's upbringing, it's your mindset. I can tell you equally harsh women who bring down other women. I was about to ask the same question. आपकी डेट में एक औरत थी दूसरी औरत को pull down करती है. She is not happy to see the other women doing good, rising. How can we get rid of that? I wouldn't generalize. Not all women are like that. No, I'll be honest. Daily, or I don't know. मतलब आप लोग भी face करते होंगे. If not here, but somewhere, some or the other way. एक औरत ही औरत को नीचा गिराती है. I think that is, it happens. For sure, it happens. It also happens amongst men. Yep. I mean, I've heard of so many fights between fathers and sons. Yep, that's also right. Yep. The son wants to run the business differently. The father wants to run it differently. There's a fight for who, when it even comes to jungles, lions and tigers eat their own children. The lioness doesn't. The lion does, the tiger does, because his territory is marked. And once the animal is grown up, that whole relationship of father and the son, it doesn't exist. So that is, I think that's human, that's animalistic nature. I think what we need to address overall is basic respect, basic understanding. And I think that's where the respect factor is missing. And I think that's the problem that most women face. In any case, weaker gender, ये है, वो है, but आप in a nutshell इज्जत नहीं करते. आप respect नहीं करते what this gender is bringing to the table. That's all. And I think it's only up to us to bring up a society where people are more respectful of each other. Yeah. And more understanding and more accepting.
Absolutely. So Prachi, with the same point of view, I would like to ask your point of view or your take in terms of menstrual paid leave for us, the people who are working, the women who are working corporate में या फिर otherwise भी जिसको इस टॉपिक के लिए मेंस्ट्रुअल लोग बोलते क्या है कुछ नहीं है तो महीने का बस 3 दिन 4 दिन का होता है बट वी ऑन द अदर साइड एज अ वुमेन वी डू नो व्हाट वी गाइस गो थ्रू एंड सबके लिए वो जो मंथ वो डेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ योर टेक ऑन द सेम मेंस्ट्रुअल पेड लीव सी टेकिंग बैक टू जो अभी PIL दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कैन यू प्लीज बी लिटिल लाउडर सो द सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दायर हुआ था उससे उन्होंने बोला कि इट्स अ पॉलिसी इशू तो वी वोंट एंटरटेन इट हाउएवर स्पेन में हमने देखा कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव अलाउ कर दिया इफ़ द डॉक्टर गिव्स द सर्टिफिकेट उन्होंने ये एंड दैट वाज डन बाय द इक्वालिटी मिनिस्टर सी दैट इशू वाज पुश्ड सो दैट इज़ व्हाट मोर मॉडर्न डेमोक्रेसी नीड्स कि everybody needs to be represented पहली चीज़ and that is not just for women for transgenders also जो ये दिया गया and other countries that give not paid menstrual leave but menstrual leave include Japan, Indonesia. So what we have to understand is कि there are many countries which have started to recognize कि औरतों को उन दिनों ज़रूरत है and not just ladies. 14 years के जब एक बच्चा होता है उसकी जब menstrual cycle शुरू होती है I think स्कूल में भी देना ज़रूरी है स्कूल में एक और चीज़ that I was discussing with my friends yesterday was white uniform क्यों दे रहे हैं लड़कियों को वो वॉशरूम में जाके चेक करती हैं कि उनके पीछे स्टेन तो नहीं लग गया है और ये सबने फेस किया है अपने स्कूल डेज में जिनके यहाँ PE के वक्त में वाइट यूनिफॉर्म होता है या ऑल द अदर स्कूल्स फिर वाइट यूनिफॉर्म इज नेसेसरी एनीवे कमिंग बैक टू द फैक्ट दैट डू women नीड yes women नीड बिकॉज एवरी वुमन इज डिफरेंट एवरी वुमन हैज डिफरेंट needs and some experience more pain some experience heavy bleeding तो सबकी ज़रूरतों के हिसाब से it is important कि वो एक चीज़ recognize करें if you want more women to be part of the workforce because I'm sure अगर men were experiencing it तो अब तक तो paid menstrual leave would have been part of policy. Yes, because obviously the problem, the struggle, the pain we guys got through तो obviously men चाहे वो यहाँ पे हमारे साथ जो हैं वो या कोई भी experience they won't understand because you cannot understand the pain until and unless you're not there in his or her shoes, right? Absolutely. So rightly said. So Gopika, you being from this makeup industry, this particular question is for you. जो आपके इंडस्ट्री है मेकअप इंडस्ट्री और बॉलीवुड हॉलीवुड या हमारे एक्टिंग फील्ड में आप देखते होंगे हमेशा मेकअप दादा होता है मेकअप दादा को बुलाइए ये दादा को बुला दिए तो आपके हिसाब से क्या है कि व्हाई वी डोंट हैव इनफ फीमेल ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट इन दिस इंडस्ट्री व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू या कहाँ पे लैक कर रहा है या क्या हो रहा है एग्जैक्टली एक्चुअली ऑन दिस पहले हमारी इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट को फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को अलाउ ही नहीं किया जाता था बेसिकली टू बी द पार्ट ऑफ द मेकअप टीम उसमें सिक्योरिटी रीजंस आ जाते थे कि गर्ल्स को एक्टर्स के साथ रहना पड़ता है बट देन अ फीमेल एक्टर शी कैन गेट मेकअप डन एंड टच्ड बाय अ मेल आर्टिस्ट बट अ फीमेल आर्टिस्ट कांट डू द मेकअप बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नो अभी जैसे मैम ने बोला कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम यू नो कि बेटा जो होता है बेटा ही फादर से अलग हो जाता है लेकिन वहीं उसी हाउस में एक मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को ये आशीर्वाद देती है कि बेटा हो यू नो अ मेल डजंट गिव यू दैट आशीर्वाद इट्स वी फीमेल्स ही हु गिव्स दैट आशीर्वाद पंडित जी पे जाते हैं पंडित जी इनका बच्चा नहीं हो रहा है आशीर्वाद दीजिए बेटा होगा सो वही बेटा आपको फिर निकाल देता है ना ओल्ड एज होम्स तो उन्हीं वजह से बने हैं सो एक फीमेल की जो रिस्पेक्ट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन हाउस एज इट्स वेरी वेल सेड द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम सो द रिस्पेक्ट दैट बिगिंस फ्रॉम योर होम from your whatever is going on in your house and we need to understand the importance of celebrating ourselves every day so जो हमारी मेकअप इंडस्ट्री की बात है वो चीज़ें सबके साथ हो रही हैं मेकअप इंडस्ट्री के साथ भी हो रही हैं एक्टर्स के साथ जैसे आपने देखा होगा कितने सारे इंटरव्यूज़ में फीमेल स्टार्स को उतना नहीं पे किया जाता जितना मेल स्टार्स को किया जाता है so there are so many things that has to be taken in consideration and make the laws according to that. So guys, इन तीनों अमेजिंग गेस्टों से बात करके मुझे ये लग रहा है कि वुमेंस डे सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए एंड एवरीवेयर एवरी सेक्टर some or the other problem is there and we guys really need to take some or the other step. This last question is like for all of you people,
हम क्रिकेट के तो बड़े ही दीवानी होते हैं, हम सब देखते हैं, लेकिन डू गाइज वॉच द फीमेल क्रिकेट भी लीग उसी इंथुजियाज्म से, उसी ही एक्साइटमेंट से एज यू पीपल वॉच मेल क्रिकेट टीम और क्रिकेट लीग आई वुड से? दूसरा इसे मैं ऐड ऑन करूंगी, आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कि इनको सेम वो पैकेज मिलता होगा जो मेल लोगों को मिलता है, जो या स्टारडम या फिर इनके जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है? सो वी विल स्टार्ट विद यू प्रिया मैम, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इट बिकॉज देयर व्यूअरशिप इज लेस कि औरतों को उतना स्पोर्ट्स में इंकरेजमेंट नहीं मिलता, और मे बी उनको लेस पैकेज दिया जाता है? व्हाई इज इट? Well, why is the earth round? I don't know. Why? You know, well, 2 points I'd like to say. Yeah. One, I like to very much agree with on the makeup part, and you know, I think there was a law that was passed about 5-6 years ago. I forget the lady's name. I'm feeling so bad about it. Okay. She got a law passed where female makeup artists were allowed to be a part of the system. They were politically maneuvered and manipulated not to be a part of the system. Exactly. So this is not anything to do with their safety. There's actually a certain body, you know, that takes care of makeup artists. आप certain amount of पैसा दो, then you're allowed to be a part of the makeup team. It's a money-making racket, and I think it's very sad to hear and know that. That is how it is. That's very sad. You know, I've just learned to accept. I don't say why. I say, okay, this is how it is. Now what? Why? There is no, for every why there's a because. It's never ending. It is what it is, and you know, it is becoming better. And that law has been passed. I'll share it with you once we're done from here, and hopefully, Mia, you can talk about it at some point. Please, yeah. The second thing you asked us about cricket was why is. Are you fond of cricket or not? पहले तो ये बताइए. Do you watch? I like watching cricket. I don't understand anything about cricket, but I have to admit the T20 format is quite exciting. And but I have been doing a lot of research, and I think cricket is somewhat rigged, is what I've heard, and of course I'm nobody to pass a judgment. But I think it is obvious, something that on which so much of money is riding, there's bound to be some amount of drama that has been created, otherwise there isn't going to be any viewership. Are women paid less? Yes, they are paid less, goes without saying, because man is perceived as the breadwinner of the family. It is very sad, because when I look at the ladies who work in our house, all I hear is stories about how their husbands are alcoholics and get beaten up. So cricket, don't know why they get paid or they don't get paid. What was your last question? मैं वही कह रही थी कि क्या ये व्यूअरशिप उनकी कम है इसलिए, या फिर क्यों, मतलब मेहनत तो उनको भी सेम लगता ही है, सेम टीम में जाते हैं. I think it's just historical. Historical, nothing particularly. It is a historical context. No. Do you guys agree with what Priya ma'am is saying? कि आप लोग के हिसाब से भी यही है कि historically पीछे चलता हुआ आ रहा है? I really would appreciate अगर आप लोग हिंदी में वो करें ताकि मेरी जनता भी आपसे कनेक्ट कर पाए. मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट टेक इस पे, बिकॉज ऑफ द व्यूअरशिप. जो जेंडर बायस है वो तो है ही इन द सोसाइटी, है ना, वी कांट एस्केप इट, वी आर फेसिंग इट ऑन द डेली बेसिस. बट मुझे लगता है कि इवन पीपल हु लव वॉचिंग क्रिकेट, दे आर नॉट वॉचिंग फीमेल क्रिकेट. एंड अगर वो नहीं देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पॉन्सरशिप्स भी इफेक्ट होती हैं. एंड व्हेन देयर इज अ लेस स्पॉन्सरशिप, यू आर गोना ऑब्वियसली पेड लेस. So मुझे ये लगता है a cricket lover around across the world, they should love the sport as it is, without thinking whether a female is playing it or whether a man is playing it. That makes me interlude. I did not know that the women match was going on, the cricket thing, and when I walked in the house, my parents watch matches. So they said कि देखो ये वाला हो रहा है, and I was surprised they played well, and I was happy to see कि मेरे parents देख रहे थे और support कर रहे हैं. एंड बिकॉज यू नो ये सब चीज़ें होती है कि हम लोग अपने वर्क डे के बाद नहीं देखते हैं, एंड वो इन्फॉर्म करते हैं देखो ये है, एंड दे आर फिनोमिनली ग्रेट स्पोर्ट्स पीपल हु आर वाचिंग. और जो व्यू वाचिंग एंड जो खेल रहे हैं वो दे आर अमेजिंग. They need more encouragement, but as ma'am said, historically there's a historical context. I just think that as a country and as a world, we are really screwed up. Sorry for the language. If we are spending billions of dollars on a dumb thing like a game.
doesn't unify and divide and all. There are bigger issues to address. Very true. And we get sponsors for something like cricket. Enjoy it. I think it's become a money-making racket. I think somewhere humanity's priorities are all screwed up. Very How true. can Well you said. sponsor, a game? You Worth spend millions on it. So I don't know where we all are going. For us, entertainment seems to be more important than a productive life. That is true, but I think या तो एक चीज हो या ना हो, अगर हो तो दोनों के लिए इक्वल हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। I mean, I'm just saying कि sportsmanship ज़रूरी है और उसको encourage करना ज़रूरी है, लोगों में आना ज़रूरी है to be good sportsman, और बाकी sponsorship वगैरह it's the bigger issue, but I feel कि encourage करना ज़रूरी है because बहुत से लोग जो क्रिकेट, जो लड़कियाँ औरतें खेलने आती हैं, वो बहुत उनकी बैकग्राउंड आप देखें तो आपको लगेगा, या जो आर्चरी में आए हैं जिनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, दैट लेडी शी वाज टॉकिंग अबाउट मेंटल कोच नहीं था उसके पास, नहीं तो वो जीतती ओलंपिक। सो यू नो आई फील लाइक कि मदद करना ज़रूरी है, इनकरेज करना ज़रूरी है और उनका हौसला अफजाई करना ज़रूरी है कि वो इस मुकाम तक पहुँचे, क्योंकि वो जहाँ से आए हैं वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। That leads me to another very interesting question कि what makes you a very strong woman? So आपके हिसाब से आपके अंदर से क्या चीज़ है, या what according to people makes you people stand out of the rest of the women or makes you a strong woman? Because जैसे मुझे अपना plus minus पता है, so ये आपके individual personal questions था, so we're gonna start with you. चलो गोपी। For me, what makes me stronger is a sensible family. Okay. I got married at a very tender age, but as I said, it's about the support, understanding of the family, which starts from your own house. So I got so empowered that I don't want to turn any, anything unturned on my way of success, because I've got that family who doesn't have a gender bias. तो आपके हिसाब से आपकी शादी बहुत कम उम्र में हुई, उसी में आपको पूरा फैमिली से देखना पड़ा, संभालना पड़ा, एंड इंटरेस्ट शी हैज़ अ सन जो 22-23 साल का है, सो आई कैन अंडरस्टैंड, पता नहीं कब आपने शादी करी होगी, कब फैमिली संभाला होगा, चाइल्ड मैरिज, लाइक आई गेस आप 19-20 साल के थे, बिकॉज़ आई नो क्वाइट अ लॉन्ग दिस थिंग, सो वही चीज़ है। सो एडवोकेट साहब जी, हम आपसे भी पूछेंगे, प्राची जी, व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग वुमेन, या फिर पर्सनल लाइफ में आप क्या हर्डल्स फील या एक्सपीरियंस करते हैं? I have seen, I guess even you are a mother of a child, if I'm not mistaken. Yeah, my daughter is 14, so of course. See, yeah, I don't comes believe you people are doing such amazing work, handling family, kids, and आजकल तो पता नहीं क्या लगते भी नहीं हो moms and all. So yeah, please, I'm so sorry to interrupt you. Strength comes from watching the younger generation. My daughter gives me strength, and I come from a family which empowers. My parents, my siblings, my husband, सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने मुझे कभी कमज़ोर होने नहीं दिया, और when they saw me weak, they have helped me, or they have been there to support me कि तुम कर सकते हो, उन्होंने हिम्मत दी है, and that is important. And then I see women who come to me for help, and I'm like, dude, मजबूत तो बनना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। I so agree. I can totally connect with you because even I'm that sort of person. अगर मेरे सामने कोई फीमेल के साथ injustice होता है, और maybe she is not outspoken, I think एक्सप्रेस कैसे हो जाता है, आई गो फॉर इट, आई सी इसके consequences क्या होंगे, बट आई हैव टू बी देयर इन द मोमेंट, एट द मोमेंट। सो यस प्रिया मैम, व्हाट्स योर गॉड, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स को, कैसे मतलब गॉड का मतलब क्या है? हाँ, what do you I meant? think my prayers make me strong. Prayers makes you strong. Prayers, and I believe there is a universe that's backing me. I always believe the universe has got my back. I'm so sure of it. Even if anything bad happens, I'm sure something worse has been deflected. Damn, high five काश में दे पाते, because even मेरे ना ट्रू कॉलम में blessed child लिखा हुआ है, because जैसे आपने बोला इंसिडेंट, और बहुत सी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं जो मुझे लगता है ऊपर वाले ने बचाया है, ऊपर वाले ने किया है, ऊपर वाले की वजह से ब्ला 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 जो भी चीज़ हुआ है। So exactly, I can connect with all of you people, yeah. So my another interesting questions are like, what are of your personal experiences or maybe reason that motivated you or motivates you people to encourage or help the other women to uplift? मतलब कुछ अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, जैसे इन्होंने अभी प्राची ने शेयर करा कि इनके पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे शी फील्स कि नहीं, I have to become stronger so that I can help the other women to rise up or uplift. तो आप लोग कुछ ऐसे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से वह नहीं हूँ, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी, प्लस मैं अपने आगे जो औरतें आएंगी या फीमेल्स होंगे उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। सो विल गोना स्टार्ट विद यू मैम।
कुछ अपने पर्सनल उसमें से, आप तो बड़े सॉर्टेड ही लग रहे हो. You've never faced or you've never come across something where you would just give up. कि no, I cannot do it, or maybe no, I have to do it because I have to be the idol for some, मानो maybe चाहे घर पे छोटी हो बड़ी हो, some of the other things, some nothing. I've had problems, but I think my friends have given me a lot of strength. Okay. I'm very blessed with very good friends. Okay. But as such, I don't like injustice. I get very irritated when I see people getting High five. Yeah, so I've had friends who've gone through things, and I have gone through things. So then that's when you want to say, then your ego kicks in, I think. So क्या मतलब है ये दो? Oh God, we can be a good team in that. I'm so like you and your side in this. हाँ तो बस फिर वो क्या मतलब है जब निकल आता है ना फिर वो देखी जाएगी. फिर चढ़ा दो गाड़ी देखी जाएगी. Nice. So what about you, Prachi? What's your take about this? It's like about वही जो do or die करना है Do or die. Nothing particular thing has ever motivated you कि करना ही है. होता है कि I was talking to someone and said, depression एक चीज़ होती है जो इंसान को या giving up एक ऐसी फीलिंग होती है जो अचानक से आ जाती है. दिन में कुछ लोगों को 10 बार भी आती है और वो 10 बार अपने को उठाते हैं. तो एक कोई इंस्टेंस नहीं बोल सकते हम कि हाँ ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. बहुत लोगों में होता होगा, बट मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट कुछ लोगों की ज़िंदगी में रोज़ होता है. एवरी डे दे गेट अप, एवरी टाइम उनको लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, नहीं मुझे करना है. एंड अगर कभी कभी हम नहीं बोलते, हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं, हमारी फैमिली बोलती है, हमारे चिल्ड्रन बोलते हैं, somebody is there. And as ma'am said, God is guiding us through other people. तो पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है, आ जाती है. No, that's true. We women are blessed with something, I guess. Even if you feel like giving now, but no, we have to do it. We'll have to pull up our socks. We have to get up. We have to do. Jeans में नहीं है ना? Carry on, sort of thing. What about you, Gopika? Well, I think the credit goes to my parents and my upbringing, because we are 3 sisters, so we are brought up in a way that we have to empower ourselves every single day. And then the life is, you just have to follow the path and help each other. It's all here and here. Mind and exactly, heart. exactly. अगर दिल और दिमाग ने बोल दिया तो help करो. अगर दिल और दिमाग में negativity है तो इंसान की सोच इतनी बड़ी चीज है कि सोच है तो सब कुछ है. एंड आपकी अपब्रिंगिंग आपको वो सोच देती है. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव लाइक द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड. सो आई थिंक दैट इज द नेवर एंडिंग स्पिरिट आई हैव बिकॉज ऑफ देम. That's nice. So before we wind up the show, आप लोग ये इस साल 2023 Women's Day के लिए क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स और ऑडियंस को देना चाहेंगे? So we're gonna start with you, Priya ma'am. What message would you like to give away to our women out there who are watching you? That you are not alone, and whatever you are going through, जो आपके साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो बहुतों के साथ हुआ है. तो get out of the self pity, and nothing is difficult. Trust me, if you want to fix something, you will find a way. So no howling, no crying. There are helplines, there are friends, there are people, there is always a solution. So get up, nobody is going to be coming to save you. Save yourself. Nice. Well said. What about you, Prachi? I would also agree that with ma'am completely. We have to, हमें अपने को खुद ही आगे बढ़ाना है, हमें अपनी हौसला अफजाई रोज़ खुद करनी है, और हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम समझते नहीं हैं मगर स्ट्रेंथ है, आगे बढ़ना है. एंड सब लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है, सिर्फ एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है. तो आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी दुनिया में, आगे बढ़ते जाना है बस. What about you, Gopika? I would say love yourself. The first thing one can do is love yourself, no matter what gender you are. But especially to the women out there, love yourself, because unless and until we are true to our own selves, we can't be true to anyone. तो मुझे लगता है अपने आप से प्यार करेंगे तो आपके लिए चीज़ें भी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी. एंड fight for your own self and happiness. So that's what I would say. That was such a wonderful messages to all our audiences and viewers. And with this, I would like to wind up this amazing, beautiful show, or maybe say a chit-chat conversation over Women's Day 2023. So thank you so much, Priya and Prachi and Gopika, for joining me and sharing अपने इतना अच्छे experiences share करे
and you encourage the people जो हमें देख रहे हैं उनको अपने तरीके से. So thank you so much to three of you guys, and all of you people कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ बने रहिए every Tuesday live with Mia Lakra, and do not forget to log in on www.trends9.com, and of course do not forget to follow TV9 Bharatvarsh and Trends9 on all social media platforms. Meanwhile, let me continue my chit chat with my guest. I am saying bye bye.